welcome to the 16th video of the Rapid Series, जहाँ पर हम करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करते हैं, उन्हें फिल्टर आउट करके ताकि आपके प्रीलिम्स के 2022 प्रीलिम्स के प्रिपरेशन में आपकी हेल्प हो. So let's begin with today's session. The first topic is about infrastructure for resilient island states. So this was launched by India along with Australia, UK, small island developing states. So India, Australia, UK ने small island developing states के साथ मिलकर इसे लॉन्च किया है on the sidelines of COP26 जो अभी ग्लासगो में हुआ था, उसके साइडलाइंस में इन कंट्रीज ने मिलकर ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है, which is infrastructure for resilient island states. So as the name suggests, it is specifically meant for the island states. And this grouping, small island developing states, भी ऐसे कंट्रीज की ग्रुपिंग है जो एक तरह के आइलैंड स्टेट्स हैं, आइलैंड कंट्रीज हैं, मतलब they are completely surrounded by ocean bodies. So now you can very easily understand the gravity of problem for them. क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा जो थ्रेट है, सबसे जो डायरेक्ट इम्प्लीकेशन है, दैट इज इन द सी लेवल राइज. सी लेवल राइज होगा तो सबसे ज़्यादा थ्रेट किसे होगे? स्मॉल आइलैंड नेशन स्टेट्स को. सो दैट इज़ वाई दे आर मोर कंसर्न कि क्लाइमेट चेंज को जितनी जल्दी हो सके रोका जाए, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसे रोका जाए, सो दैट द सी लेवल राइज इज विद इन कंट्रोल एंड देयर वेरी एग्जिस्टेंस इज अंडर थ्रेट. ठीक है, उस कंट्री का वेरी एग्जिस्टेंस इज अंडर थ्रेट, तो इसलिए दे आर मोर कंसर्न. सो दीज कंट्रीज along with India, UK and Australia have come up with this initiative. तो इसका जो एम है वो कि क्रिएशन ऑफ ए coalition for putting in place infrastructure that can withstand the natural disasters and lessen the economic losses. ठीक है, कि अब जितना डैमेज हो चुका है क्लाइमेट चेंज में, उस डैमेज के रिस्पॉन्स में देयर विल बी सम और दी अदर क्लाइमेट एक्सट्रीम इवेंट्स, आइदर ड्रॉट या फ्लड, किसी भी फॉर्म में हो सकता है. तो उसको फेस करने के लिए उसके रिस्पॉन्स में to make these countries more prepared in terms of infrastructure specifically, this coalition has been this initiative has been launched. ठीक है, तो see, दो तरह के मेजर्स होते हैं. एक होता है मिटिगेशन and another one is adaptation. So mitigation is डिजास्टर होने ही ना दें ऐसा कोई स्टेप ले. ठीक है, कि क्लाइमेट चेंज को होने ही ना दें, ग्लोबल वार्मिंग के रिलीज को रोके. सो दीज आर मोर लाइक प्रिवेंटिव स्टेप्स कि हम क्लाइमेट चेंज होने ही ना दें. Adaptation means you have accepted a reality that climate change has gone to that extent कि अभी हमें we are taken it for granted कि climate change तो damaging extent तक हो चुका है. Now we have to prepare for the losses, for the effects, for the repercussions. So for that we have to be prepared by preparing our buildings, by generating awareness, by preparing our infrastructure. ठीक है, तो that is adaptation. So in that case, this whole coalition, this whole initiative, that falls under the adaptation category. ठीक है. And about six, as I mentioned, these are the group of countries which are basically the island countries. So for example, Caribbean, Pacific, Atlantic, Indian Ocean, Meridian, South China Sea region. So in सभी water bodies में they are the most vulnerable group of countries. ठीक है, so these are the countries in these water bodies. So states account for nearly 2/3 of the countries that suffer the highest relative losses due to disasters. So पूरे वर्ल्ड में जितने भी लॉस हो रहे हैं डिजास्टर से, उनमें से 2/3 of the losses are only from these countries, which is very much understandable. Okay, so this is about this particular topic. Next is the dialogue, which goes by the name of One Sun, One World and One Grid. So as the name suggests, this is a concept कि solar energy को harness करना है on an integrated network, and the integration is not just spanning over states or spanning over over the different 2 or 3 countries, but across the globe जितने भी countries को sun solar power मिल रहा है in good amount and they are capable of harnessing that amount of solar power, they should combine their grid ताकि अगर कहीं पे पावर कमी हो तो जहाँ पे पावर सरप्लस हो, that can be transferred from surplus to deficit. So that's the whole idea why we want a grid, why we want one integrated grid. So that's a quite broad and visionary concept.
and of course a lot has to be done before this can be actually realized. So it is a multi-layered dialogue between one sun, one world grid. That was the initiative of India. So that is one fact you need to remember, that OSOWOG, which is one sun, one world, one grid, is an initiative of India and in partnership with COP26 presidency. Okay. So an international solar alliance, World Bank, यूके गवर्नमेंट एंड विल्टन पार्क, सो इन सब के साथ इंडिया का ये इनिशिएटिव है. सो इंडिया इट इज एन इंडियाज इनिशिएटिव टू बिल्ड अ ग्लोबल इकोसिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड renewable energy resources. ठीक है, so that will connect not one or two but about 140 countries across a common grid. एक single grid होगा. That is the initial, that is the base idea. And the blueprint has been developed under World Bank technical assistance. उसके blueprint को develop करने के लिए World Bank ने अपना technical assistance दिया है, and that will be implemented to accelerate the deployment of this grid connectivity. So of course this is a very wide scale, global scale program, so that will happen in phases. It cannot happen in just one go. So the phases which are envisaged under this program are in three parts, three phases. First is Asian continent. So throughout the Asian continent, the countries will be put together, will be brought together under one grid. Then the pool of renewable energy in Africa. So first Asian continent, then it will connect with the African, and then the global interconnection. So that is the whole plan कि एशिया से कनेक्ट करेंगे. एशिया, पहले तो एशिया के सारे कंट्रीज को कनेक्ट करेंगे, फिर अफ्रीका जाएंगे, एंड देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है. So it will assist all its participating bodies to attract effective investments and renewable energy sources by utilizing technology, finance and skill. So of course इन सब के लिए पैसे चाहिए, investment चाहिए. So this particular platform will help to attract such investment, because now it is at a global level. So investors will be more interested, and they will be more they can trust such institutes or such initiatives much more now than before. Okay, so this is about this. Next is green day ahead market. Now this is also somewhere related to renewable energy. So बेस कॉन्सेप्ट क्या है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी का सेल एंड परचेज बिफोर टाइम. सो बिफोर टाइम यू आर, एक तरह से आप ये कह रहे हो कि एक दिन पहले एज द नेम सजेस्ट डे अहेड मार्केट. सो एक दिन पहले यू आर कमिटिंग यू विल बाई और यू विल सेल दिस मच अमाउंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी. So that the green goes for renewable, as you all know, and day ahead means one day before you are planning to buy or sell. अभी तक जो normal और अभी भी जो normal procedure है for power exchange is through the power purchase agreements, जो कि discoms और power generators के बीच होते हैं. But now this will provide a gradual shift towards a more effective system जहाँ पे ऐसे agreements की जरूरत ना पड़े, and that will be done on a more short term and more on a more real time basis. Okay, so GDAM portal has been there, and it will operate in integration with the conventional day ahead market in power sector. So जो day ahead market है power का exchange already conventional market power में already चल रहा है, and now it has been planned for or launched for the green sector, that is renewable energy also. So it will operate in integration with, so conventional power and renewable energy दोनों के लिए साथ ही ये ऑपरेट करेगा डे अहेड मार्केट प्रोग्राम. ठीक है. सो दैट विल इनेबल द जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज टू बाई और सेल renewable energy through open access as in you can purchase, you can sell on a real time basis. Okay, on a market determined real time basis. So DAM, that is the day ahead market, which can be either for conventional power or for renewable energy. So that is DAM, is an electricity trading market for delivery on the following day. Following day मतलब day ahead market. अगर आपने आज कर दिया मतलब आपने एक दिन पहले ही कर दिया, that means you want the delivery the very next day. ठीक है. So that is day ahead market. Power exchanges will allow participants to submit bids together for both the conventional and renewable energy. See, any such a statement आया कि day ahead market is only for renewable energy, then that will be incorrect. Okay, so that is for both. Then, as I said, it will lead to a gradual. Okay, sorry for the disturbance.
Okay, so as I said, it will create a pan-India green market by unlocking the untapped potential of renewable energy and instant payment. So yeah, I was saying कि अगर ऐसा कोई statement आए कि आपका जो ग्रीन डे अहेड मार्केट है दैट इज़ ओनली फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, देन दैट विल बी एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट. दैट इज़ फॉर बोथ रिन्यूएबल एंड कन्वेंशनल पावर. ओके, सो दिस इज़ अबाउट दिस टॉपिक. मूविंग ऑन, द नेक्स्ट इज टेरेस्ट्रियल वाटर स्टोरेज. Recently, a report called 2021 State of Climate Services, released by the World Meteorological Organization, stated that the terrestrial water storage dropped at the rate of 1 centimeter per year in the 20 years, that is from 2002 to 2021. So 20 सालों में हर एक साल जो टेरेस्ट्रियल वाटर स्टोरेज है वो हर साल 1 सेंटीमीटर घटता जा रहा है. So this was the report. This is the finding. The report is 2021 स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज. ये आपको याद रखना है. रिपोर्ट किसने रिलीज़ की आपको याद रखना है. WMO, दैट इज़ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ की है. ओके, सबसे पहले टेरेस्ट्रियल वाटर स्टोरेज क्या होता है. कुछ तो नाम से भी पता लग रहा होगा कि जो टेरेस्ट्रियल एरियाज़ में वाटर बॉडीज़ हैं, ठीक है, इन अ वेरी जनरल टर्म. सो इट कैन बी डिफाइंड एज अ समेशन ऑफ ऑल द वाटर on the land surface and in subsurface also. That is the catch कि not just the land surface but the subsurface. So basically terrestrial area पे जितने भी दिख रहे हैं और जितने भी नहीं दिख रहे हैं, जो नहीं दिख रहे हैं that is anyway subsurface. So उन्हें हम terrestrial water storage कहते हैं. So it includes surface moisture also, root zone, soil moisture, groundwater, snow, ice. So not just कि exactly water bodies, moisture and सॉइल मॉइस्चर, रूट जोन में जो पानी होता है, जो नमी होता है, वो सब का समेशन जो है दैट इज़ कॉल्ड टेरेस्ट्रियल वाटर स्टोरेज. सो इट मॉड्यूलेट्स द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एंड इट इज़ अ की डिटर्मिनेंट ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी एंड इंडिकेटर ऑफ ड्रॉट. ठीक है, ड्रॉट है कि नहीं, सूखा पड़ा है कि नहीं, वो डेफिनेटली इससे पता चलेगा. क्योंकि अगर नमी नहीं रहेगी, फॉर एग्जांपल द सॉइल मॉइस्चर, अगर नमी नहीं रहेगी दैट इज़ अ क्लियर इंडिकेशन कि वहाँ पे सूखा है. ठीक है, सो दैट इज़ वेरी मच सेल्फ एविडेंट. So TW is dropped at the rate of 1 centimeter per year in 20 years, and the biggest losses have occurred in Antarctica and Greenland. Many highly populated lower latitude locations have also experienced. So main point here is Antarctica और Greenland में सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है TWS का. ठीक है, पिछले 20 सालों से हर साल 1 सेंटीमीटर ये घटता जा रहा है. The report is 2021 State of Climate Services and it is released by WMO. ठीक है, दिस इज़ द न्यूज़. देन समटाइम्स UPSC ऐसे कुछ टर्मिनोलॉजी दे के दे कैन आस्क दैट दिस टर्म रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग. फिर वो 4 ऑप्शन दे देंगे. सो फॉर द पास्ट 4 to 5 years ऑलमोस्ट हर साल एक ऐसे क्वेश्चन आता है. तो जस्ट फॉर दैट सेक एलियम निकेरम. ठीक है, सो दिस प्लांट अच्छा, ये जो प्लांट है दैट वाज डिस्कवर्ड इन 2019. अभी इसके बारे में कुछ पता चला है एंड दैट्स वाई इट इज़ अगेन इन न्यूज़. सो दिस प्लांट वाज डिस्कवर्ड इन उत्तराखंड एंड अभी ये कंफर्म हुआ है दैट इट्स अ न्यू स्पीसीज ऑफ द एलियम. द जीनस दैट इंक्लूड्स मैनी स्टेपल फूड सच एज अनियन एंड गार्लिक. सो अनियन एंड गार्लिक जिस जीनस के हैं, द सेम जीनस दिस प्लांट ऑल्सो बिलोंग्स टू. ठीक है, दैट इज़ दैट इज़ अ फाइंडिंग which has been confirmed now. The plant was discovered way back in 2019 in Uttarakhand, but अभी ये confirm हुआ है कि ये उसी genus का है जिस genus का onion and garlic होता है. ठीक है, so although it is new to science, the species has long been known under the domestic cultivation and local communities इसे use करते आ रहे हैं. ठीक है, and it is restricted to the western Himalayas and has not yet been reported from anywhere else in the world, not just in India but anywhere else in the world it has not been reported. Western Himalayas में ही रिपोर्ट हुआ है एंड अभी उत्तराखंड में 2019 में मिला था. ठीक है, so that's about it. Just remember this term and what it relates to. Then Biological Diversity Amendment Bill 2021. So mostly एक्ट जो बन चुके होते हैं दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, बट फॉर सच क्रूशियल टॉपिक्स लाइक बायोडाइवर्सिटी बिल्स भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं. सो दिस बिल वाज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड लोकसभा में और फिलहाल ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में है. सो बेसिकली दिस बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड कि अभी जो प्रेजेंट बिल है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑब्लिगेशन है अंडर कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD and another one is Nagoya Protocol on Access and Benefit Sharing.
सो इन दोनों में हमारा जो कमिटमेंट है उसको पूरा करने के लिए जो लीगल फ्रेमवर्क चाहिए, उसके लिए एग्जिस्टिंग एक्ट जो है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, दैट इज़ नॉट सफिशिएंट. सो दैट इज़ वाई this new bill has been proposed. Important point is it provides for a decentralized three-tiered mechanism for the implementation of the act. ठीक है. So existingly the biodiversity management committees are responsible for preparing people's biodiversity registers, which keep a record of all the flora and fauna, including the details of traditional knowledge. So this is not a part of this bill. This is a part of the existing biodiversity act. ठीक है. सो उसमें जस्ट फॉर योर नॉलेज कि उसके अंडर जो रजिस्टर है, एक रजिस्टर होता है दैट इज़ कॉल्ड पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, जिसे बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज़ प्रिपेयर करती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रिपेयर करने की. एंड दे कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑल द फ्लोरा फौना एंड ऑल द ट्रेडिशनल नॉलेज एज वेल. ठीक है, उस पर्टिकुलर रीजन. So yes, this is about the topics that we had to discuss today. We will meet again in our next video with a set of 5 more important topics. Till then, keep revising your concepts, keep studying well. All the best.